क्या हुआ संकेत, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, so Garv, तुम you can take the chair where you are most comfortable. Yes. Conference room में जो तुम्हारे लिए सबसे comfortable हो वहां पे बैठना. Yes. Okay, what did you do last time? So we did session 3 for geometry. Okay. Then I think there's a small part which is left in session 2 that I'll complete with you. Then we will go to session 4. Yes. Today. So basically by the end of this session, you would have completed first 4 chapters of SAT mathematics. And Saturday you are doing your English classes. Am I correct? Yes. Okay. So chalo, let's start now. What is that we are doing today? Let me, rather than introducing what we'll do today, first let's complete whatever is the balance part from last class. So I will share my screen and I go to session 2 and we start with a problem which looks something like this. I want you to solve this for me, and I think we can also do it together if required. Oh, just hold on. Aap padh lo, then we do this. The cost of telephone call using long distance carrier A is $1 for any time up to and including 20 minutes and 7 cents per minute thereafter. The cost of using long distance carrier B is 0.06 per minute for any amount of time. For a call that would last T minutes, the cost of using carrier A is same as B. If T is a positive integer greater than 20, what is the value of T? Bolo, samajh mein aaya question? Yes. Now let's solve it. Now this is a linear equation problem. They have given it to you, they have given it in a word problem format, and there are no equations that is given. So you are supposed to form equation, solve and find the value of variable. Bolo, ठीक है ना? ये objective समझ में आ गया? Yes. Now if that is the case, then I would like to go to my whiteboard. Let me share. Rekha, can you please make me co-host? Yes, sir. बना दो, मुझे co-host बना दो. Now, if that is the case, let us solve this question. Now, this question says, Garv, अगर इसको हम लोग solve करें और समझने की कोशिश करें, so I am doing this with you. मैं तुम्हारे साथ साथ कर रहा हूँ, तुम्हारे पास वहाँ पे question है. Pen come. So tell me if this is visible to you when I am writing. So there are 2 carriers. One is carrier A. ये जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. It is. Okay. So carrier A says that it will charge us. There's a fixed amount that they will charge. मैं वापस दिखाता हूँ question. मेरे लिए भी देखने में आसानी होगा. They say that they will charge $1 any time up to 20 minutes. आप 20 मिनट तक कोई भी टाइम बात करो, वो चार्ज फिक्स करेगा, which is $1. Okay? Yes, sir. तो मैंने $1 लिखा. I am finding the total charge. Let's say total charge is C. So it says total charge will be equal to 1. Now they say the talk time was more than 20. तो अगर टॉक टाइम मोर देन 20 है तो जितना भी टॉक टाइम था, ये जो मैंने इक्वेशन बनाया देखो अगर समझ में आ रहा है, t minus 20 is the time more than 20 minutes. इसका cost will be $0.07, which is 7 cents per minute. Can I say this is my total cost for carrier A? Yes. इसी तरह से if I have to look into carrier B says my total charge, तो इसको CA बोलते हैं, इसको CB बोलते हैं.
My total charge is, no matter how much you talk, you will have to pay $0.06 या 6 cents per minute. And आपने बात किया t minutes के लिए, तो आप मुझे पे करोगे 0.06 t. ये टोटल चार्ज हो गया. Yes. At the same time, these guys, they are saying that both the charges are same. Carrier A का total charge और carrier B का total charge same है. Basically, they are saying CA is equal to CB. Yes. Okay. So if that is the case, then 1 plus 0.07 into t minus 20 should be equal to 0.06 t. Yes. Okay. So let us solve this. 1 plus 0.07 t minus 20 into this will be equal to $1.4. देख लो मैंने सही किया है क्या? Yes. 20 into 0.07 मैंने ब्रैकेट ओपन किया. This is equal to 0.06 t. So ये हो जाएगा 0.01 t is equal to 0.4. बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. So can I say now t is equal to 0.4 upon 0.01? So basically ये हो जाएगा t is equal to 40 minutes. तो मतलब ये जब 40 minutes का टॉक टाइम होगा तो दोनों कैरियर पे चार्ज सेम होगा. आंसर इज 40. Yes. अब आपको कुछ कॉपी करना है तो कॉपी करो, अदरवाइज बताओ ये समझ में आ गया? Yes, sir. Understood. ठीक है. सो शुड आई स्टे ऑन दिस पेज? Yes, sir. Yes. ठीक है. ओके. ओके. Am I in the wrong class? यस वेरोनिका. Yeah, actually, I was informed that the August batch for SAT has classes from 6:30 to 8:30 on Thursdays and Saturdays. Correct. Correct. So you are in the right class. We are doing session 4 today, Veronica. Okay, did I never attend this? Sorry. Did I skip session 4 because I don't remembering skipping any class? So Acha. So Is it- today's agenda is doing chapter 4, which is inequalities. okay, And we are also doing graphing of linear equation because Garv and I mean he has missed that class. That portion was not done. okay. So we are doing that. So if you have missed or you want to redo chapter 4, you're most welcome. You can sit in the class and do the chapter 4 again. Okay, I like that. हाँ ठीक है. So answer is 40 minutes. Garv मुझे बताना when you have noted it down. Yes. Done, sir. So I go back to the question. Let's see which option is this. This is option C, which says 40 minutes. बोलो आ गया समझ में? आंसर होगा ऑप्शन सी. Yes, sir. This was from your homework. Yes, for sure. Chalo, next problem. This is a challenge problem, which is a grid-in problem. Let's solve this and send me your answer by typing. आपको privately मुझे message करना है इसका आंसर क्या होगा. Let's solve this. Yes. This is not there in your book. How many timeouts were taken? Yes, correct, Veronica.
Garv, I'm waiting. How many timeouts were taken? You can announce your answer, Garv. Yes. Garv, you need my help? No, sir. 8. 8 is the right answer because total break time was 12 minutes Yes. and each break was for 1.5 minutes. So you must be taking 8 breaks so that 1.5 into 8 is 12 minutes. Okay? Yes. Okay. Now the last part before we go to chapter number 4 is graphing of linear equation. Iska kya matlab hota hai? Let's try and do that. So when we say graphing of linear equation or graphing of a linear relationship, so what does this basically mean or how you do it? ये बहुत सिंपल सी चीज है. जब भी आपको ग्राफ करना पड़े इसका मतलब ये होगा that there will be some equation given to you and there will be 4 options in form of graphs and they will ask you for the given equation find the right graph. One of the methods to understand graphing is जो सबसे easiest method हो सकता है. So let's say the equation is y is equal to 3x plus 6. ऐसा कोई equation आपको दिया है and you have 4 options and they are asking you tell us which is the right graph. So you know that m is positive. ये देखो m positive है. So for sure the slope of graph should be a positive slope जिसमें line ऊपर जानी चाहिए left to right है. एक तो ये होगा तो उसे आप एलिमिनेट कर दोगे. दूसरा तरीका है the second step could be assume some value of x and y. So because it is a straight line तो मुझे 2 ही पॉइंट चाहिए because a straight line will pass through two points and no other straight line will pass through the same straight line unless and until superimpose होता है. तो सबसे पहले रखो x 0 और एक पॉइंट ढूंढो. तो इसमें अगर x 0 रखेंगे इक्वेशन में you get y as 6 and put y as 0. So I get x as -2. बोलो. Yes. तो मुझे 2 पॉइंट मिल गया. मतलब अगर ये मेरा ग्राफिकल प्लेन है एक पॉइंट है 0,6 0,6 मान लो ये 6 है यहाँ पे. तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड इज -2,0 -1 -2 मान लो ये -2 है. तो वो जो लाइन इस तरह का होगा दिस ऐसा वाला लाइन इज द राइट आंसर. Yes. तो ग्राफिंग के क्वेश्चंस आते हैं एसएटी पेपर में. आइडिया इज कि आप स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को देख के कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करो. फिर जो ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं होते हैं उनके लिए द अदर मेथड इज स्टार्ट यूजिंग सम वैल्यूज. आइडियली 2 वैल्यूज शुड हेल्प यू. एक्स को 0 रखा कुछ वैल्यू मिला, वाई को 0 रखा एक्स का कुछ वैल्यू मिला और आपने ग्राफ में टेस्ट किया कि वो वैल्यू कहाँ पर है. नाउ लेट्स सॉल्व. अभी आपके बुक में नहीं है जितने भी प्रॉब्लम हम करेंगे. So let's solve some problems of graphing the linear equation. So let me give you guys question number 1 for graphing. ये आपको करना है. क्वेश्चन पढ़िए समझिए and then I will give you options. नहीं ऑप्शंस तो हैं वहां पे A B C D देखना. A के नीचे B है. Please solve. There is a case given and they are asking us which is the right graph for this case. Send me your answers privately.
Which graph represent relationship between force and displacement? Rather, restoring force, displacement. आपको आंसर्स टाइप करके प्राइवेटली चैट बॉक्स में भेजना है मुझे. करेक्ट वेरोनिका, गुड. बोलो गर्व. नाउ यू कैन अनाउंस. क्या हुआ गर्व कुमार? नीड माई हेल्प? Yes. Garv, what happened? Tell me. Sir, I need you. Shall we do this together? Yes. तो मुझे बताओ. अच्छा, उससे पहले why don't you read it loudly? Read the question loudly. The force needed to restore a flexible spring stretch or displace 2 centimeters to its original length is 0.5 newtons. For every additional centimeter of displacement, the restoring force increases by 0.25 newtons. Which of the following graph represents the relationship between the displacement x in centimeters and the restoring force f in newtons? So, what is the relationship? Is it a direct relationship? Displacement and restoring force? Yes. Positive relationship hai. If you go on displacing more, you will require more restoring force. ऐसा है? Yes. Okay. So which of the options can never be answer? A, B, C, D में से कौन सा option देखने से rule out कर सकते हो आप? A. A. Because ये inverse relationship है. Yes. Because this is positive relationship, तो ग्राफ को ऊपर जाना चाहिए. That is happening in B, C, D. बोलो. So I can eliminate and I can say A can never be the answer. But now how do I decide which among B, C, D? तो अब B, C, D में भी एक टाई ब्रेकर लगा सकते हैं. B, C, D में भी कोई एक ऑप्शन है जो आंसर कभी हो ही नहीं सकता. वेरोनिका, गर्व. Yes. Which one? B. B for Bombay. This can never be answer because if displacement is 0, how can restoring force be 2 units, 2 Newton? Yes. Displacement तो हुआ ही नहीं है. बोलो गर्व. Yes. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. Now everything is between C and D. Now let's look at some of the data point. If displacement is 2 centimeter, the restoring force is 0.5 Newton. देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या? No, sir. No, it's not happening. This is 2 centimeter displacement on x-axis. Restoring force is 2 newtons on y-axis. हो ही नहीं रहा है. This is not true. But if you look here, yes, this point out here is, अब ये वैसे भी एक ही बचा है. But anyway, this point is very close to what they are saying. Displacement of 2, restoring force is half a Newton. Follow curve. Yes, sir. Answer is option D. ये मेथड समझ में आया एलिमिनेशन वाला? Yes, sir. Okay. Let me go ahead. So Veronica ने इसको किया. अभी गर्व I think next वाला तुम कर पाओगे. Let's do one more. This is the next problem. A, B, C, D.
try the same method, have the same approach. You will arrive at your answer fast. Chalo, come on, guys. Try and eliminate and reach to the right answer quickly. Feet का और inches का ध्यान रखना. Correct. Correct. तुम अनाउंस कर सकते हो गर्व. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. नहीं, मुझे क्लियर नहीं. सी फॉर कैलकाटा. यस सर. करेक्ट. गुड. सो अब ये आप दोनों का राइट है. मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट इफ यू वांट मी टू सॉल्व कि हाँ इसका डिस्कशन का जरूरत है, mine was a fluke or I am not very clear, let me know. So I guess I made a mistake because I did not pay attention to the conversion between inches and feet. Okay. But you did send me the right answer, which is option C. I did. I was actually initially confused between C and D, but then after you said about feet and inches, I realized that it might be a fluke. I'm not very sure though. Okay, so let's see how do we identify this. Now, air potatoes are invasive plants that can kill other plants by growing over them and smothering them. Air potatoes can grow up to 8 inches a day and reach a length of 70 feet. Which of the following graph represent the relationship between H in feet and D in days for an air potato plant that is initially 4 feet long and growing at the rate of 8 inches per day? So with number of days, it will grow. ये तो degrow हो रहा है. This cannot be the answer. आगे बढ़ते हैं. They say that initially it is 4 feet long. जब आपने study चालू किया, if you look into this, this is initially 10 feet long. ये भी answer नहीं हो सकता. Now answer can be C and D, but the problem is it can grow maximum to 70 feet. अब देखते हैं हम लोग. I know that it is growing at the rate of 8 inches per day, and the conversion is, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 feet would be equal to how many inches? 12. 12 inches. So this is basically 8 inches that we are talking about. It can go up to 70 feet. अगर आप ग्राफ डी में देखोगे, in less than 10 days, this has become 70 feet. ये तो possible ही नहीं है, because आप 8 inch per day grow कर रहे हो. You are already at a length of 4 feet. Okay, so 10 days में आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 inches grow करोगे. Now 80 inches, if you divide by 12, let's see. 6 point something. 6 point something. So which means 10 दिन में 6 point something plus 4, आप 10 point something पहुँचोगे. 10 point something. Yes, sir. Which is more evident in graph C, where because graph D says that you have reached a height of more than 70, which is not possible. Okay. The answer is option C. हमने 10 days का growth निकाला. You said 6 point something. 4 वो already था. So 6 point something plus 4 will be 10 point something in 10 days. In 10 days. This has already crossed 70 feet in 10 days. This is not possible. You can only be around 10.
Yes. Kumar? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we clear all of this and we go to, sorry, let me clear again and go to the next problem, which is this one. अच्छा, ये करने से पहले ये वाला करो, 10th वाला पहले करते हैं. This is real SAT problem. Veronica A. Okay. Garv, need your answer quickly. Garv, you can announce your option. Yes. The growth rate R of population of deer. Chalo bhai, Garv, what happened? Let me know if you want me to do this. Sir, option B. Option? Which option? D. B for Bombay. D. B for Delhi. No. Sir, B. Sir. नहीं गर्व मुझे ना क्लियर सुनाई नहीं दे रहा. Either it is B or D. Sir, B. B for Bombay. Yes. ठीक है. तो अब इसको करते हैं guys. I'm afraid it's not correct from both of you. Let's see. This is the equation I have. Yes, sir. If I understand this equation, it says the rate of growth of deer population is R and N is the size of population. Yes. Let me break it into a linear equation. Rather, let me re-express in linear equation. So can I say, मैंने bracket open किया. Can I write it like this? Yes. Still better, can I write it like this?
ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी. Yes. Now this is in that form of y is equal to mx plus c. Yes. What is the value of m? Sir, 0.25. Right. And what is the sign of m? Sir, minus. Minus. What does it mean? So the slope is negative. The slope is negative, which means the graph should be going down, right, guys? Yes, sir. चलो ग्राफ पे चलते हैं. Now if you look into this graph, which two options can never be answered? Yes. A and B. A और B तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं. Yes. Answer can be either C or D. Now if you look into y-intercept देखो. What is the value of y-intercept? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? So positive. पॉजिटिव. ये देखो ना, ये मैंने यहाँ लिखा है. Have a look. Y-intercept. Have a Yes. look. पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है. अगर ये पॉजिटिव है तो इस ग्राफ में दो तो आंसर आपने अभी मुझे बोला कि हो नहीं सकते, विच इज A एंड D. इसका y-intercept पॉजिटिव है, Sir, C. ये आंसर हो गया. बिकॉज D का तो y-intercept नेगेटिव है, ओरिजिन के नीचे है. बस सॉल्व हो गया ये, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन. डन. बोलो, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes. So this is what SAT will be like, and you will get questions like these जो अभी हमने किया, जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10. Last problem before we go to chapter number 4. Let's look into this. Which of the following is true of this graph in XY plane? So ये एक इक्वेशन दिया है जो थोड़ा सा अलग फॉर्म में है. आपसे पूछा है ये इक्वेशन को देख के ये चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है. डू विच एवर वे यू वांट टू. आपको जैसे करना है वैसे करो. I will try and give you two methods. आप करो अभी इसको. Veronica, try again. You're missing something. चलो गर्व, you can announce your option. Veronica ने अपना बता दिया है. Yes, गर्व. A, B, C, D. Sir, C. Okay. Now let me solve this, guys. आप दोनों का unfortunately ये भी correct नहीं है. So is the answer A?
Sorry. Is the answer A? Yes, it is. So now let's look into this. इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करता हूँ. And you guys know both the methods. अभी हमने डिस्कस. चलो. First I take method A. Method A. In method A, what I will do is I'll try and find out some values for x and y. I'll put x equal to 0. So put x equal to 0. What will be value of y? If you put x equal to 0? 9. 9. अब आप बताओ मुझे, अगर आप ग्राफ देखोगे x equal to 0 मतलब वो पॉइंट आएगा y एक्सेस पे. Yes. तो कैन आई से वो y इंटरसेप्ट होगा? Yes. 0,9. इसी तरह से अगर मैंने y को 0 रखा तो x का वैल्यू बताओ. -6. -6. तो बेसिकली ये जो वैल्यू है वो x एक्सेस पे आएगा 0 -6,0 मतलब वो x इंटरसेप्ट है उस लाइन का. Yes. तो बस आंसर आ जाएगा y इंटरसेप्ट इज +9 एंड x इंटरसेप्ट इज -6. यहाँ पे आ जाते हैं. y intercept, x intercept is -6, y intercept is +9. Answer is option A. ठीक है? Yes, sir. मेथड 2. अगर ऐसे नहीं करना है सर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं. इसको लिखते हैं y/9 is equal to x/6 + 1. Multiply by 9 throughout. Y is equal to 9/6 + 9. सॉरी x आएगा यहाँ पे. और this is equal to y is equal to 3/2x + 9. Yes. What is +9? y इंटरसेप्ट जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल जाता है. लेट्स गो टू दी ऑप्शंस. और याद रखना स्लोप 3/2 स्लोप है इसका. आगे चलते हैं. अब इसको देखते हैं. y इंटरसेप्ट 9. हाँ यहाँ तो दिख रहा है ये पॉसिबल है. y इंटरसेप्ट -6 ये आंसर नहीं हो सकता. ग्राफ इज अ लाइन विद अ स्लोप ऑफ 2/3 नहीं 3/2 ये भी आंसर नहीं हो सकता. ग्राफ इज अ लाइन विद अ स्लोप ऑफ -3/2 नहीं +3/2 है. सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है. ऑप्शन ए इज राइट. बोलो भाई. Yes, sir. Understood. तो ये दोनों मेथड में से आपको जो ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं इसको. ये समझ में आ गया गर्व कुमार? Yes, sir. Understood. So now let me go to chapter 4. अब chapter 4 पे जाते हैं. तो chapter 4 पे जाने से पहले chapter 4 का ज्ञान. Hold on, let me make myself spotlight. नहीं तो ऐड हो गया शायद. Right. Now, if you look into chapter 4 is talking about inequalities. Inequalities is a very interesting topic because you get multiple questions on inequalities. Inequalities में questions linear equations के साथ, absolute value के साथ, और word problem में. So multiple ways inequality problems can figure, and you can expect 2 to 3 problems coming from this area clubbed with other area. तो inequalities हम समझने की कोशिश करते हैं. Very simple topic. If you take care of some basic 3-4 rules, you should not get any question wrong. आपका right आना चाहिए आंसर. इतना simple और अच्छा सा topic है. What I will do is I will introduce the theory part first, जैसा हम हमेशा करते हैं. We will do some theory. After we are done with theory part, we will go for solving problems on inequality. चलो, let's start. अब हम आते हैं थियरी पे फॉर इनइक्वालिटीज. अब ये इनइक्वालिटीज क्या है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. फर्स्ट इसको समझते हैं. सो वी आर डूइंग इनइक्वालिटी with respect to linear relationships, let's say, in our case. So guys, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, स्पेशली चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में, we were talking mostly of equations where there were two sides. There was something called as left hand side which was equated to your right hand side. दोनों साइड पे कुछ quantities, variable entities थे और हम उनको equate कर रहे थे. When I say inequality,
For sure, I mean when things are not equal on both sides. Okay, so it could be your left hand side is greater than right hand side, your left hand side is less than right hand side, it is greater than or equal to, less than or equal to. हम ये वाली साइंस की बात करते हैं, है ना? Yes. Whenever I say that there is an equation ax plus by equal to c, right? Let's say कुछ ऐसा है, ये ऐसी इक्वेशन है, तो मुझे x, y के कुछ ऐसे पेयर्स मिलते थे, ऐसे पॉइंट्स मिलते थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे. So all these points would lie on this line. Yes. When it is equation. But since now we are not talking about equation, I will not get ordered pair. मुझे ordered pair मिलना बंद हो जाएगा. Rather ordered pair मिलेगा, but I may not get, you know, points on the line. I may get points which become part of entire solution area. जब आप less than equal to में बात करोगे, less than equal to or greater than equal to में बात करोगे, so you may be getting, or rather you will get some area that becomes part of the solution and not necessarily only the points which are lying on the line. तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है. तो अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया, मैं कुछ एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से x plus 5y greater than 1, मैंने ऐसा एक पॉइंट लिया. Now let's say I take a point, मैंने लिया x is equal to 0 and y is equal to 1. So if I substitute x equal to 0 and I substitute y equal to 1, will I get something that is true for the given in equation? Yes, 5 is greater than 1. इसका मतलब 0, 1 बन गया सॉल्यूशन एरिया का पार्ट. ये करेक्ट सॉल्यूशन है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है. You put x equal to 0, you put y equal to 1, we get 5 greater than 1, which is true. Hence, this is part of the solution. बोलो, समझ में आ रहा है? Yes. तो इसमें सबसे पहले ये समझने के बाद there are few notations or I should say some symbols that we must understand. If I say x is greater than or equal to a and less than or equal to b, basically I mean a and b are included in the solution set of x. और इसको मैं लिखता कैसे हूँ? With these third brackets बोलते हैं इनको, या आप इनको हाफ स्क्वायर ब्रैकेट जैसे भी आपको बोलना है. इसका मतलब a और b सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है. बट अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता x is greater than a and less than b, इसका मतलब a and b are not included in the solution set, और मैं इनको वो सेमी सर्कल में लिखता, ये वाले ब्रैकेट में लिखता a, b. ठीक है भाई? Yes. तो मान लो मैंने कुछ आपको बोला x is greater than or equal to 3, तो इसके सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा? Any number and every number that is greater than or equal to 3. तो क्या 3 सॉल्यूशन सेट में है? Yes, sir. और 3 से लेके कहां तक? पॉजिटिव इंफिनिटी तक. मैं इसको इस तरह से लिखूंगा. Yes. तो ये जो थर्ड ब्रैकेट है, इसको आपको तब लिखना है जब वो सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड हो. Yes. तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा. सेकेंड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू मस्ट रिमेंबर समथिंग अबाउट ऑपरेशंस ऑन इनइक्वालिटी, जिसको हम साइन चेंज भी बोलते हैं. तो ये वाले रूल्स आपको याद रखने हैं. तो गाइस, इफ आई टेल यू दैट a is greater than b, if a is greater than b, and let's say there's another number c which is greater than 0. अगर मान लो मैंने एक c नंबर लिया greater than 0, तो अगर मैंने दोनों तरफ c को ऐड किया, a plus c and b plus c, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन वैसे ही रहेगा. अगर a b से बड़ा है तो a plus c भी b plus c से बड़ा होगा. बोलो, am I making sense? ये समझ में आया? Yes, sir. Similarly, a minus c और b minus c में क्या होगा? Same. Same. If a is greater than b, then a minus c will also be greater than b minus c. या मैंने c को 0 से बड़ा माना है. Yes. Similarly, a into c will be greater than b into c. बोलिए, समझ में आ गया? Yes.
बट ये सब तो ठीक है, बट इफ मान लो C को मैंने नेगेटिव माना, तो माइनस AC विल बी लेस देन माइनस BC। अगर आपने सेम नेगेटिव क्वांटिटी दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर देना। यस, ये बट वाला केस है। पॉजिटिव क्वांटिटीज में एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू नहीं है, बट अगर नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। अभी कर लेते हैं, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4, मान लो मैंने 1 -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, -5 -4, साइन को चेंज करना पड़ेगा। यस, ठीक है। यस सर। इसी तरह रेसिप्रोकल में भी साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर A B से बड़ा है तो 1/A विल बी लेस देन 1/B। रेसिप्रोकल लिया तो साइन चेंज करो। यस, तो 5 4 से बड़ा है मगर 1/5 विल बी लेस देन 1/4, क्योंकि 1/5 होता है 20%, अगर परसेंटेज में देखना है 1/4 होता है 25%। यस वेरोनिका? क्लियर सर। तो दो टाइम पे साइन चेंज करना जरूरी है। जब नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया आपने, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय सेम नेगेटिव क्वांटिटी और यू टेक रेसिप्रोकल, याद रहेगा ये? So what if you divide A by C and B by C? Then A by C will be smaller than B by C, right? नहीं, इट डिपेंड्स। तो चलो मैं डिवीजन वाला लेता हूँ। इफ A is greater than B and let's say C is greater than 0, so she is asking me what if I divide A by C and B by C? B by C will be greater. Sense of inequality will not change. Yes, Rekha. Okay, thank you. Veronica, ये change नहीं होगा. So, for example, if 5 is greater than 4, Okay. and let's say C is equal to 2, so 5/2 and 4/2 करेंगे, तो still 5/2 will be greater than 4/2. But at the same time, let's say मैंने negative C equal to -2 से divide किया, A by -C divided by B by -C, of course inequality change हो जाएगा, क्योंकि आपने बेसिकली माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, -1/C से मल्टीप्लाई कर दिया, तब चेंज होगा ये। Okay, sir. बट पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया तो कुछ चेंज नहीं होगा। Okay. ओके कर। यस सर। अब आपसे क्वेश्चन है मेरा, if A by B is greater than, if A is greater than B, sorry, and I tell you that X is greater than 0, what happens to A to the power X and B to the power X? इनके बारे में क्या बता सकते हो? A will be greater than A raised to the power X will be greater than B raised to the power X. Correct. Yes. What if I tell you X is less than 0? Opposite B raised to the power X will be greater. Sorry? B raised to the power X will be. Yes, because this will become A to the power minus X upon B to the power minus X, which can be written as 1 upon A to the power X. This can be written as 1 upon B to the power X. तो किसी पावर में करके हमने रेसिप्रोकल लिया है, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. 5 is greater than 4, 5 to the power -2 and 4 to the power -2 का रिलेशनशिप निकालना है। This will become 1 upon 25 and this will become 1 upon 20. 1 upon 25 अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये 0.04 होता है। 1 upon 20 देखोगे तो 0.05 होता है, ये बड़ा होगा। समझ गए? Yes, sir. Okay. So this is all about inequalities here. No, this is not all about inequalities. This is about sign change. It be 1 upon 1/16. Come again? Sir, it should be 1 upon 16. No? Oh, I'm so sorry. 1 upon 16. Yes. Correct. 1 upon 16. So 1 upon 16 will be somewhere around 100. 100 को इधर लाओ तो 16 6 ये आएगा 0.06 something.
ठीक है? Yes. Yes, sir. ओके, थैंक यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा साइन चेंज के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं आपको बोल रहा था, लेट मी टेक करना था। Next thing that you must remember, guys, that whenever I have signs like greater than or less than, अगर मेरे पास ऐसे साइंस हैं तो जब मैं ग्राफ को प्लॉट करूंगा, whenever I am plotting the graph, I'll have dotted lines on the graph. The inequalities will be represented by these dotted lines. मतलब points on the line are not included on the solution set. But अगर greater than equal to या less than equal to है, and if you plot them on graph, you will plot it through solid lines, which means points on the line are included in the solution set. मगर ये समझने के लिए कि क्या पार्ट सॉल्यूशन सेट में है क्या नहीं, हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से y इज कुछ ले लेते हैं -x+2, ऐसा कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स ट्राई एंड प्लॉट दिस कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। y इज ग्रेटर देन, नहीं सिंपल वाला लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू -x+2, इसको प्लॉट करते हैं। सो लेट्स से आई विल यूज अ रेड कलर हियर। Let's say this is my graph paper. When I put x equal to 0, can I say y is 2? Yes, I can. So 1, मुझे एक पॉइंट मिलेगा ये वाला। And when I put y equal to 0, x हो जाएगा 2, 1 and 2. मुझे 2 पॉइंट मिल गए। अगर मुझे 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो मैं इजीली एक लाइन बना सकता हूं। तो ये मेरी लाइन है, मैं सॉलिड लाइन बनाऊंगा। I'll make a solid line because I have greater than equal to relationship. But the point is, what area is included? Is it above the graph or is it below the graph? I know points on the graph, point on the line are part of solution set क्योंकि ये greater than equal to का symbol है. But which area? Inequality में area मिलता है, above the graph या below the graph? ये कैसे पता चलेगा? So by taking points, for example, trying to satisfy the equation. Okay, so let's do that. Take some points. 0. X equal to 0 and Y will be equal to, give me a second, y को क्या लेना है? 2. Minus. नहीं वो तो Greater than equal to 2. वो तो इस पे है ना। तो मुझे कुछ पॉइंट्स बताओ ना जो मुझे टेस्ट करना है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को ये पता है क्या ये क्या होता है? डू यू गाइज नो व्हाट इज ओरिजिन 0,0. ओरिजिन टेस्ट? Origin test. Okay. ओरिजिन टेस्ट मींस टेक अ पेयर वेयर x is 0 and y is 0. ठीक है? Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करो इसमें, y को रखो 0, x को रखो 0 और इसको चेक करो। Is 0 greater than or equal to 2? No, sir. No, sir. So origin test fails. If origin test fails, means origin is not part of solution. समझ में आया? Yes, sir. तो इसका मतलब लाइन के ऊपर वाला एरिया इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि अगर ओरिजिन टेस्ट पास हो जाता तो ओरिजिन को सॉल्यूशन टेस्ट में आना पड़ता, सॉल्यूशन स्पेस में आना पड़ता, एंड वो सॉल्यूशन का पार्ट होता। ओरिजिन टेस्ट करो, x में 0 रखो, y में 0 रखो, देखो ओरिजिन सॉल्यूशन फेल होता है, पास होता है। ओरिजिन टेस्ट पास होता है तो ओरिजिन को सॉल्यूशन का पार्ट बनाओ, फेल होता है तो सॉल्यूशन का पार्ट मत बनाओ, और आप पूरा एरिया निकालो। बोलिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. Yes, sir. तो अगर इस पे अब कोई क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग हैंडल कर पाएंगे इसको? Yes, sir. ठीक है, तो लेट्स से एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। आई लेट मी आस्क यू एंड वी विल डू इट टुगेदर, इसमें कोई वो नहीं है। लेट्स इफ आई टेल यू y is less than or equal to 2x minus 4 and y is greater than or equal to, एक सिंपल सा कुछ भी ले लेते हैं, -2। सिर्फ इसको प्लॉट करते हैं, इतने से को प्लॉट करते हैं। तो मैं वही करूंगा, I'll have an x plane, rather y plane and an x plane,
मैंने ऐसे बनाया, अब इसको प्लॉट करते हैं. लेट्स गो फॉर लाइन 1 गाइस. लाइन 1 या inequality 1 in equation 1, put x equal to 0, y will be -4. So -4, 1 2 3 4, एक पॉइंट ये मिला. Put y equal to 0, y को रखेंगे 0 तो x हो जाएगा 2, 1 2, दूसरा पॉइंट ये मिला. तो मेरा ब्लू लाइन कैसा होगा? कुछ ऐसा. अब इसका सॉल्यूशन सेट लाइन के ऊपर है या नीचे है? डू अ ओरिजिन टेस्ट. लाइन के ऊपर की नीचे? Sir, Below the line, because if you put x equal to 0 and y equal to 0, it says 0 is less than or equal to -4, which is not 4, which is not true. So origin test fails. तो origin को तो लेना ही नहीं है. वेरोनिका समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया ये वाला, ये पूरा एरिया इसके नीचे, लाइन के नीचे. लेट्स गो फॉर दिस लाइन. y is greater than or equal to -2. तो सबसे पहले तो y equal to -2 की लाइन बनाओ. y equal to -2 की लाइन होगी ब्राउन वाली लाइन जो मैं बना रहा हूँ. A line parallel to x-axis passing through y equal to -2. बोलो, समझ में आया? yes. Yes, sir. अब इसमें ओरिजिन टेस्ट लगाते हैं. बताओ, ब्राउन लाइन के ऊपर की नीचे? सॉल्यूशन कहाँ है? The brown line के नीचे. नीचे है. Put y equal to 0. Put y equal to नहीं, ऊपर है. origin test pass, because 0 is greater than or equal to -2 है. मतलब origin को solution set में होना है, मतलब y के ऊपर, लाइन के ऊपर. Yes. अब अगर आप देखोगे दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, which is this part, जो मैं एक पर्पल कलर से बना रहा हूं, ये है आपका सॉल्यूशन सेट. ये वो पॉइंट्स हैं यहाँ पे. यू हैव ऑल दोस पॉइंट्स. इनफाइनाइट प्लेन है. ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस रीजन एंड ऑन दीज लाइंस will satisfy both the equations simultaneously. Yes. तो ये इनका सॉल्यूशन सेट. ये जो इंटरसेक्शन क्रिस क्रॉस दिख रहा है आपको, Yes. ये मतलब इतना, this could be the highest level of difficulty that they can ask you on set paper as per their syllabus. उनका स्कोप इतना है, ये पता होना चाहिए. Okay, sir. बोलो, ये सब कर पाओगे? समझ में आ गया है? Yes, sir. Okay. So Garv Kumar, what is time by your watch? So, sir, exact 7:30. Exact 7:30. So we take a 5 minutes water break. 7:35 पे वापस मिलेंगे. Okay, sir. Okay, sir. So now, since we have seen this, I think अब हम लोग जा सकते हैं कुछ questions करने के लिए. So like I said, this is an important chapter, chapter number 4. So concept of inequality. Solving में मैंने आपको sign change का rule बताया था. Forming and interpreting inequalities जब हम लोग word problem पे आएंगे तब मैं बताता हूँ. So let's see this. Let's see the first problem. I think it's a very simple problem. I'll give you some time, like a minute or so. You try and do and share your answer with me privately in the chat box. Then which of the following must be true? Send in the chat box. Correct, Veronica. Garv, you can announce your option now. Option B. Option B is correct. Because if x is greater than 8 and sum of two quantities has to be 30, the other quantity must be less than 22.
अब वहां पे लिखा है y is greater than 0, वो भी true हो सकता है, but then if you say y is greater than 0, then y can take any value. It can be 25 also. Yes. And that will create problems. So answer is option B. So this was straightforward. This is a real SAT problem. Let's see this one. Question number 4 from your book. 4.1, question number 4. Again, a minute's time. Yes, what happened? If A is greater than B and this is also true, which of the following must be true? Sir, option B. Option? D. ये तुम्हारे B और D में ना बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे सुनने में इधर. Sir, D. D for Delhi Yes. is correct. So Veronica, देखो, where have you missed this? Now this says A is greater than B. This also tells me that A into something which is B minus A equal to 0. अब क्योंकि A और B बराबर नहीं है तो B minus A तो 0 नहीं होगा. But you are multiplying it into A and this is 0. So for sure A is equal to 0. Could you get this, Veronica? Yeah, that's what I said as the answer. But if A is greater than 0 and A is greater than B, can I say that B out here is less than 0? Because A 0 है और B A से छोटा है, तो B should be less than 0. बोलो ऐसा बोल सकते हैं? Yeah. रोमन 2 भी ट्रू है और ये भी ट्रू है. Now अब इसको देखो, A is 0 तो मैंने 0 रखा. A is 0, मैं रोमन 3 पे हूं. A is 0 minus the negative quantity, because B will be some negative quantity. Yeah. Let's say B will be equal to some minus X, क्योंकि वो 0 से छोटा है. Now when you do this, you will have a positive quantity minus of minus, Yes, sir. which will be greater than 0. Right. So option D is the right answer. Roman 1, 2, 3 are true. Okay. Okay. चलो आगे चलते हैं. Let's see this. How many ordered pair of positive integer x, y is this inequality true? कितने हैं ऐसे? 1 ordered pair, 2, 3 or 5? 30 seconds. Sir, 1. No, sir, 2. Okay, hold on. चलो बताओ कैसे 2? Which 2 ordered pair? Which ones? What are the values of those ordered pairs? So 1. 1. Okay. गर्भ कुमार बताइए. Sir, 1. X is 1 Yes. and 1 what? Y क्या है फिर?
ऑर्डर्ड पेयर बताना है ना, x और y का पेयर 1 कॉमा क्या हुआ 2 कैसे निकाला आंसर? अगर x को 1 रखा तो y को क्या रखा है 1, यस तो 1 कॉमा 1 ये ट्रू हो जाएगा। x को रखो 1, y को रखो 1, क्या ये ट्रू है? यस Yes, 2 into 1 is 2, plus 3 into 1 is 3, 2 plus 3 is 5, 5 is less than 6. तो एक तो 1 कॉमा 1 है। नेक्स्ट सर 0,0 0 कॉमा, मगर सर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा था, यहाँ पे क्या लिखा है? Positive integers. 0 को आपने पॉजिटिव इंटीजर कैसे मान लिया? वो तो क्लासिफाई नहीं होता है पॉजिटिव इंटीजर में, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना? तो 0 वाला तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। आंसर इज ऑप्शन ए। There is only one ordered pair of positive integer which will satisfy this inequality. यस ठीक, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, we cannot overread it. यस अब आगे चलते हैं। Simple problem again, let me give you, let's say 40-45 seconds. All possible values of x into y निकालना है आपको। करेक्ट वेरोनिका, बोलो गर्व। सर बी बी, यस ओके। तो x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? x को ले लो 8 एंड y को लो 3, 24। What about minimum value when y is equal to -1 and x is equal to 8? हाँ, समझ में आया कि आपको मिस्टेक? यस आप x को मैक्सिमाइज रखो और y को मिनिमम वैल्यू लो, और जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट अ मिनिमम वैल्यू फॉर x इंटू वाई, क्योंकि वहां पे एक नेगेटिव वैल्यू है y का। तो आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नहीं समझ में आएगा तो मुझे रोकना, मुझे इसमें बहुत वो नहीं दिखा। चलो ये वाला करते हैं। इसमें hollow circle means that value is not included in the data range. Solid circle means that value is included in your solution set or data range. Right, correct, Veronica. सर ऑप्शन ए
Option A. A is correct. Both of you have got it right. तो discussion चाहिए तो मुझे बताओ, otherwise we will go ahead. So let's go. हाँ गर्व? Let's go ahead, sir. Okay. So no doubts here. Yes. No, sir. So they gave you data for unhealthy body and asked you healthy wala. Answer is option A. Fine. Let's go to this problem. This is also a very good question. Question number 23 from your book. Coordinate plane is something that you must have done in your last class. Yes. Okay, Veronica, correct. You can announce Garv. क्या हुआ गर्व? Y is less than x plus k1, y is greater than 2x plus k2. Suppose that this is the solution 0, 0 to system of inequalities. जैसा हमने theory में अभी देखा था दो inequality को plot करके. Which of the following conclusion can be drawn about k1 and k2, which should be true for sure? नहीं हो रहा है? Sir, I'm not confused with this. तो अगर 0, 0 solution set है गर्व, if I put it in equation 1, इसमें रखते हैं 0, 0. So can I say k1 is greater than 0? Yes. Similarly, 0, 0 का solution set है तो इस inequality को भी satisfy करेगा. Y को 0 रखो और x को 0 रखो. Can I say ये ऐसा कुछ बनेगा? Yes, sir. So for sure k1 is greater than k2. Yes, sir. Answer आ गया option B. Yes. बस और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में. बोलो, shall we go ahead? Yes. Sad challenge problem 1. 30 seconds. बोलिए. Okay. So let me solve this. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. Veronica, have a look. I have 4c plus 5 less than 4c plus 3. Can I subtract 4c from both sides? Yes, sir. So I am subtracting same quantity from both sides. I'll get 5 less than 3. Is this possible? No. ये तो cancel हो गया ना ये. If this is not possible, answer is there is no such solution. Right. Garv, Yes, sir.
I just read the first option. I did not even read further. So. हाँ, तो वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो भाई. चलो, let's solve one more. What is the range of value for this thing? Minus 4x minus 6. So send your answers privately. Sad challenge problem 2. Okay, Veronica, आपने आंसर भेजा है क्या? Let's see. I'm not sure. Check करते हैं. What happened, guys? If this is this, what is the possible range of values for minus 4x minus 6? Now this is correct, Veronica. Bolo Garf, what happened? Five less than 2x plus 3 less than 11. कैसे solve कर रहे हो आप इसको? Give me your method. Sir, I'm just substituting the values and Substituting the value. Or what you could do is, उन्होंने ये दिया है and they are asking minus 4x minus 6. Sorry, ये आपका ही. So what if I multiply by minus 2 throughout? मैंने minus 2 से throughout multiply किया, minus 2. तो हो जाएगा minus 10. क्योंकि negative quantity है sign change. Minus 2 तो ये minus 4x, minus 2 तो ये minus 6. Minus 22 sign change. yes. ये negative quantity से multiply किया. So the value जो इसका होगा will be greater than minus 2 and less than minus 10. Yes. बस वो वाला ऑप्शन देख लेते हैं. Any value greater than minus 2 and less than minus 10. Answer is option B. बोलो गर्व कुमार. Understood, sir. एक और करो. कैलकुलेटर अलाउड है इसमें. Stat challenge problem 3. This is a graded problem, तो आप आंसर टाइप करके भेजना चैट बॉक्स में.
Correct. Veronica, good. A 300-acre farm produced 20,000 bushels of corn last year. What is minimum rate of production in bushels per acre that is needed this year so that farm's 2-year production total will be at least 49,100 bushels? एक साल प्रोडक्शन हो चुका है, 2 साल का टोटल प्रोडक्शन बताया है कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए. What is the minimum rate of production per acre? You can also announce your answer. How much is to be produced per acre? गर्व इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो ये बताओ, what is the target? What's my target? How much should I produce minimum? Sir, 49,000. Right. So my production should be, जैसा मैंने लिखा है, minimum 49,100. इससे ऐसे ज्यादा होना चाहिए. How much have I produced already? 20,000. 20,000. So I need to produce the balance, which is minimum I need to produce. 29,100. ठीक है गर्व, ये Yes. जो समझ में आ रहा है? Yes. This I need to produce over a farm which is 300 acres. So per acre is what is to be 97. produced over 300. ये देखो समझ में आया क्या इक्वेशन जो हमने लिखा है? अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, you will come down to 97. So this is the minimum number of bushels that I need to produce per acre to reach my target this year. Answer is 97. बोलो. Yes. तो मैं क्लियर कर देता हूं. तुमने नोट कर लिया? Yes. आपको कुछ नोट करना है क्या? No, sir. ये वापस आ गया अगर नोट करना है तो. Yes. चलो नोट नहीं करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, which is about interpretation. Now this is interesting. Let's look into this. ये वाला हम लोग साथ में करेंगे तो सिर्फ अभी पढ़ लेते हैं. Let's read it together. It says Yasmin is a pharmaceutical sales representative. आप आ जाओ उस क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12 है आपके बुक में. Her firm gives her a weekly allowance of $300 to spend on lunches with physicians and their office staff. A restaurant which Yasmin often buys the lunch charges $7 for a cold dish and $11 for a hot dish, including drinks. If each meal is subject to 5.75% ka sales tax, which of the following inequality represent the number of cold dishes or hot dishes that Yasmin can purchase from sales-related lunches in 1 week, assuming she purchases all lunches from this restaurant? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, हम सबसे पहले स्टॉप शेयर करके जाते हैं और हमारी शीट पे आते हैं और इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. Okay, let me take a new sheet. So what they are saying is that Yasmin को $300 मिलते हैं पर वीक टू स्पेंड. उसने उस हफ्ते C कोल्ड डिश खरीदा और H हॉट डिश खरीदा. ठीक है, एक कोल्ड डिश का प्राइस था $7 तो टोटल कॉस्ट हो गया $7C. One hot dish would cost me $11 तो टोटल कॉस्ट हो गया 11H hot dish का cost. If I add the two cost, I am getting the total cost on dishes. बोलो ये समझ में आया? Yes. इसके ऊपर एक सेल्स टैक्स लगा which is 5.75%. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.0575 से. ये समझ में आया कैसे आया? 1.0575. नहीं आया तो पूछो. No, sir. Can you repeat how did you do? So percentage converted into numbers. अच्छा, तो is this part clear? ये जो मैंने curly part बनाया है Yes, sir. ये क्लियर है. This is the total cost that she will incur, but question says there is a sales tax also. उसके बिल में एक sales tax लगेगा. वो क्या है, उसका रेट क्या है?
whatever is the bill, उस पे 5.75%. 5.75% टैक्स लगेगा. Yes. तो अगर किसी वैल्यू को मुझे इतना टैक्स लगाना है, मतलब वो वैल्यू प्लस उस वैल्यू का इतना परसेंट 5.75 upon 100. Yes. Can I take x common? Yes, I can. So what is left is 1 plus 0.0575 or x multiplied by 1.0575. वही किया मैंने. Yes. तो अगर मुझे उसको 5.75% से बढ़ाना था तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.0575. Yes. बोलो Veronica. So clear. So now this becomes the total cost. But all said and done, उसके पास $300 से ज्यादा नहीं है, तो ये वैल्यू या तो Less than equal to 300. या उसके बराबर हो. Yes. बस इसके आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि उन्होंने इक्वेशन मांगा है हमसे, सॉल्यूशन नहीं मांगा है, वैल्यू नहीं मांगा है एच और सी का. लेट्स गो टू द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर सी, Yes. 12th का आंसर आएगा ऑप्शन सी. बोलिए क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. अब इस तरह के दूसरे क्वेश्चंस करते हैं वेयर ऑफ कोर्स यू विल ट्राई फर्स्ट. नाउ लेट्स लुक इनटू. गर्व तुमको कुछ नोट करना है? No, sir. That's Okay. This is the next problem that I want you to do. Question number 15 from your book. 1-5. Please do. This is again interpretation, nothing to solve. Take a minute's time and answer. Read all options. You can type your answer and send it to me. What does value 18,000 represents in the inequality? Yes, girl. Correct. Very good. So B. Option B. B is the answer. अब आप दोनों का ये राइट है, कोई डिस्कशन चाहिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, अदरवाइज No, sir. नन. गर्व कुमार. no, sir. ओके, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. इसमें इक्वेशन बनाना है आपको. क्वेश्चन 21 फ्रॉम योर बुक. चलिए लेट्स सॉल्व दिस. चलो भैया आंसर भेजो. अच्छा भेजा. ओके वेरोनिका, करेक्ट.
गर्व वेटिंग फॉर यू, अनाउंस करो अपना ऑप्शन. Sir, option B. Sorry? Sir, option B. B for Bombay, right? है ना? Yes, sir. Correct. Answer is correct. Now, if you guys need any discussion, मुझे बताओ. Otherwise, we'll go to next problem. Answer So B I है. have one question. Why not A? Why not A? चलो, let's do that discussion. Because I was confused initially between 6 and 30. हाँ ठीक है. Between A and B. Okay, so why don't you read it loudly for us? A math teacher decides to create several practice tests for her students before they take the SAT. She wants to make some non-calculator tests and some calculator tests so that her students will be able to practice both. She figures that each non-calculator test will take 3 hours to create and each calculator test will take 4 hours to create. If she's willing to devote at most 6 hours per week of her time for the next 5 weeks to create the practice test, and she wants to provide at least 8 practice tests, which of the following system of inequalities can help her determine how many of each type of test she can create? Right. So I know that non-calculator is N and calculator is C. And if I add them, she must provide at least 8 tests. तो ये वाला जो value है minimum 8 होना चाहिए. So this can be greater than 8. Unfortunately, between A and B, ये दोनों में greater than 8 है. Right? C और D तो आंसर हो ही नहीं सकता. अब between A and B में आगे चलते हैं. She will take 3 hours to create each non-calculator test. So if And she is 4 creating for n test, per test 3 hours, so this is the time she will take to create all non-calculator tests. Yes, sir. Similarly, this is the time she will take to create all calculator tests. But at most, maximum she can give 6 hours per week for 5 weeks. मतलब उसके पास maximum time है 30 घंटे का. Right? तो ये जो time है, this So, but can per week is only 6 hours, right? Yes, per week 6, and she can work for next 5 weeks. So maximum time she can give is 30 hours. Okay. And this is the maximum time we have. So this value can be, less than or equal to 30. 30 से बड़ा नहीं हो सकता 3n plus 4c. I know, but she won't spend any week, more than 6 hours. But Yes, but you are not working in per week. Sorry, Garv. Sir, but the answer hasn't been asked in like how many hours she requires to do it in a week like that. Like No. I mean, let us understand. So they are not talking per week because when you read Age, she says, the question says, she wants to provide at least so many practice tests. And she is working for next 5 weeks. So which means we are not talking about per week limitation. We are talking about total 5 week में वो क्या काम कर सकती है. Okay. तो total 5 week में उसके पास इतने hours हैं. अगर वो per week पूछा होता तो मुझे ये एटलीस्ट 8 प्रैक्टिस टेस्ट को भी पर वीक में लाना पड़ता. समझ में आया? Okay, sir. Yes, sir. गर्व आपका कोई डाउट है इसमें? no, sir. ठीक है. Very good problem. This is real SAT problem and an excellent problem. Let's solve this. I give you 2 minutes. Question number 24.
So Garv says option D, Veronica says option B. Let's see. Garv, read it out loudly. A housing down payment is money that a prospective buyer provides upfront when purchasing a home and is usually a percent of the purchase price of the home. A lender typically requires private mortgage insurance, which the buyer's down payment is less than 20% of the purchase price. To secure a mortgage, buyer also needs to have additional cash on hand for closing costs and prepaid property tax. Suppose a buyer wants to purchase a $375,000 house and must have $7,200 on hand for closing costs and property tax. Which of the following inequalities represent the total funds the buyer must have on hand to secure the mortgage without having to pay EMI? So the buyer wants कि वो house purchase करे मगर उसको PMI नहीं लेना पड़े, private mortgage insurance नहीं लेना पड़े. Now to avoid PMI, there's a condition. The buyer's down payment should not be less than 20% of purchase price. Because if it is less than 20% of purchase price, you will have to buy a PMI. Have you understood this? Yes. Now they are asking, what is the total fund the buyer must have on hand? जिसको F बोला है उन्होंने. If the buyer wants, this house must have on hand to secure the mortgage without having to pay PMI. तो देखो, एक तो है cost of house. What is cost of house? $375,000. $375,000. 20% of that. 20% निकालेंगे. 0.2. So इसका 20% होगा multiplied by 0.2. So this is the minimum that I should have in hand. Yes. But Plus the point is, cash. I should also have something called as closing cost. So purchase cost का 20% plus closing cost is 7,200. Yes. Because ये पैसा तो चाहिए. So my fund should be minimum of this. If it is more than this, I am happy. So fund in hand should be either greater than or equal to 20% of purchase price and 20% of purchase price and closing cost. अगर इतना होगा तो I need not buy a PMI. Answer is option B. अब आते हैं आपके आंसर पे. आपके आंसर में प्रॉब्लम ये है कि आपने 20% क्लोजिंग कॉस्ट का भी निकाल लिया 7,200. ऐसा नहीं है, ये तो फुल चाहिए. क्वेश्चन सेज 20% ऑफ परचेज प्राइस. Not the closing cost is a something different or additional to your purchase price. बोलो गर्व कुमार, समझ में आ गया? Yes, sir. So answer होगा ऑप्शन बी. Can I go ahead? Yes. Yes, sir. चलो, ये मैं करता हूँ share. Sorry, let me go back. So this is not able to be erased. अच्छा, ये मैंने स्लाइड वाला यूज किया. सो चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Let's solve this one. And you guys read it, we will do it together. बस पढ़ लो, हम लोग इसको साथ में करेंगे. An international bank issued its traveler's credit card. Worldwide. Now, when a customer makes a purchase using a traveler card in a currency different from customer's home currency, the bank converts the purchase price at daily foreign exchange. पहले वो convert करते हैं.
then they charge 4% fees on the converted cost, and it is posted on that credit card bill. So Sara lives in US, तो उसका home country हो गया US. She is traveling on vacation to India, so उसका traveling country या destination या visiting country हो गया India. She used her traveler's card, जिसका rule हमने ऊपर देखा, for purchase of something in India which costed her 602 rupees. उसने कार्ड को इंडिया में स्वाइप किया और 602 रुपए लगे उसके. The bank posted a charge of $9.88. बैंक ने इतना पोस्ट कर दिया उसके क्रेडिट कार्ड अकाउंट पे, which included the fees. They are asking what is the exchange rate that was there that day. ये आप लोगों को करना है. तो इसको मैं साथ में करता हूं और इसके बाद वाला क्वेश्चन मे बी आई गिव यू एज होमवर्क और विल डू हियर, लेट्स सी. बट इसको करते हैं. सो लेट्स ट्राई एंड सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. नाउ व्हाट इज द रूल? इफ यू रिमेंबर दोस रूल, वो रूल क्या है ट्रैवलर्स क्रेडिट कार्ड का? ट्रैवलर्स क्रेडिट कार्ड का पहला रूल है दैट यू आर पेइंग इन विजिटिंग कंट्री का करेंसी. तो जो भी विजिटिंग कंट्री का करेंसी है, यू आर पेइंग इन दैट visiting country currency में you pay. Then bank converts to home currency. Into home currency, correct? Into home currency And then using applies 4%. the exchange rate for that day. After this, bank charges 4%. जो भी total cost है आपका convert करने के बाद आया, उसका 4% बैंक अपना कमीशन चार्ज करता है, and then it is posted on your card bill. Posted on bill, card bill. Now if you go into the question says transaction was done for 602 rupees. फिर कुछ चीजें बीच में हो गई, and $9.88 was posted. So basically guys, step 1 or step 4 आपको दिया हुआ है, and they want the exchange rate. समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes. बोलो. Yes, sir. Understood. So let us say that exchange rate on that day, exchange rate that day was, अब आपको exchange rate चाहिए ना उनको, so let's say it was X rupees per dollar, ऐसा मान लेते हैं. Yes. एक्सचेंज रेट उस दिन X रुपीस था फॉर $1. बोलो, ये समझ में आया? Yes, sir. तो अगर मैं 602 रुपीस को X से डिवाइड करूंगा, कैन आई से आई विल गेट नंबर ऑफ डॉलर्स? Yes. वेरोनिका? Yes, sir. Because 602 का यूनिट इज रुपीस, X का यूनिट इज रुपीस पर डॉलर, रुपीस से रुपीस कैंसिल, डॉलर ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज सो मेनी डॉलर्स शी स्पेंड. Yes. And bank will put a charge now. तो हमने कन्वर्ट कर लिया. Now bank will put a charge. 4% चार्ज लगाएगा. तो कैन आई से टोटल अमाउंट होगा 4%. इसको 4% से बढ़ाना है, 1.04 में मल्टीप्लाई करो. Yes. बोलो. Yes. This was given as equal to 9.8. तो x निकालना है. X will be equal to 9.88. rather गलत बोल रहा हूं मैं, 602 into 1.04 divided by 9.88. ये कैलकुलेटर से करिए और मुझे x की वैल्यू बताइए. Sir, no, I made a mistake. I'm sorry. What is it? Sir, 63.36. Loudly, please. Be a bit loud. 63.36. 63.36. This is so many rupees for $1, क्योंकि x was rupees per dollar. ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन. 63.36 बोला है तुमने, तो 63.36 closest is कौन सा ऑप्शन? C. C. Option C is the
राइट आंसर ये वाला, ये जो मैंने येलो किया है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, कैन वी गो एंड? Yes. You want to copy something that you have written? Yes. Done, sir. आगे चलते हैं, नहीं, लेट मी नो व्हेन डन। Sir, done. Done, sir. सेम क्वेश्चन, बट ये देखो 25 में पैरा 1, ये जो पैरा 1 था ना, रूल फॉर ट्रैवलर्स क्रेडिट कार्ड, 25 का पैरा 1 विल अप्लाई, पैरा 2 विल नॉट अप्लाई टू दिस, Yes. पैरा 2 should be replaced by this paragraph. So will the exchange rate be carried on? No, because exchange rate was calculated only in paragraph 2. Yes. Okay. Paragraph 1 में rule is there, that rule will apply for travelers credit card, and then this paragraph of question 26. तो यहाँ पे उसको एक और ऑप्शन मिला है कि वो ट्रैवलर्स क्रेडिट कार्ड नहीं ले, वो प्रीपेड क्रेडिट कार्ड ले ले अमेरिका में, which is worth 7,500 Indian rupees. पर उसका एक छोटा सा कंडीशन है कि अगर कुछ भी अनस्पेंड रहा तो वो फॉरफिट हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। So you should type your answer and send me, or announce, whatever you like. Okay, Veronica, let's see. Garv, you have to unmute and let me know your answer. तो अब अगर आप ये क्वेश्चन को पढ़ा है आपने, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट्स हैपनिंग, वेरोनिका? There is another card company, PCC, prepaid credit card, that will give her a credit card which has the balance has 7,500 in it, and the balance will be put according to the daily exchange rate, and whatever she spends out of the 7,500 will be used by her, and the remaining will be given to the company. Okay. So they are basically asking what's the minimum amount she should spend on prepaid credit card, which will make it cheaper from travelers credit card. Okay. ठीक है. Garv, have you understood this problem? Yes. Okay. So if you have, मैं ना ये इसको मेरे white board पे लेके आता हूँ. देखो, this is a beautiful problem, and ये दोनों question आए थे SAT में. So let me use some. तो बताना आप लोगों को दिखना चाहिए. तो guys, वो सारा के पास ना, सारा has two options basically. She has two options. She can go for travelers credit card, जिसका रूल अभी हमने देखा था, वो 4-step रूल है, or she can buy a prepaid credit card.
प्रीपेड क्रेडिट कार्ड का रूल क्या है कि शी कैन बाय इन इंडिया, इन यूएस इटसेल्फ, जिसका डिनोमिनेशन है इंडिया में आके शी कैन स्पेंड 7,500 रुपीज। बट वो खरीदेगी कैसे? अमेरिका में उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है उस पे से वो 7,500 रुपीज डॉलर में पे करके खरीद लेगी। शी विल कम टू इंडिया, शी विल यूज इट। इफ एनीथिंग इज अनस्पेंड, मान लो उसने 7,000 का ही खर्चा किया, if anything is unspent, that will be forfeited, she will not be returned that money. Traveler's credit card का क्या rule है? You buy it in your home country, you come, you swipe, you will pay in the visiting country's currency, it will be converted on that day's exchange rate and a 4% charge will be there. यहाँ पे कोई charge नहीं है। ये समझ में आ गया आप लोगों को दोनों को difference? Yes, sir. Now they are asking what is the minimum amount she should spend on her prepaid credit card. वो कितना कम से कम खर्चा कर दे यहाँ पे, so that अगर कुछ बच भी जाता है, still 7212. अगर कुछ बच भी जाता है तो still that amount that she had spent here is cheaper than had she used traveler's credit card. बोलो गर्व, समझ में आ गया ये? ओके, सो ट्रैवलर्स क्रेडिट कार्ड का तो खर्चा फिक्स है, कितना? 7,500 डिवाइडेड बाय लेट्स से डॉलर का जो भी रेट है, डी। डी स्टैंड्स फॉर डॉलर पर रुपीज, ऐसे ले रहा हूं मैं। या रुपीस पर डॉलर लेना चाहिए मुझे, नहीं मैं गलत ले रहा हूं ना, मुझे रुपीस पर डॉलर लेना चाहिए ना, एक्सचेंज रेट रुपीस पर डॉलर, so that rupees and rupees gets cancelled, so many dollars I have spent. Bolo. Yes. Yes, So sir. D is exchange rate for rupees per dollar. ठीक है? Now let us assume that her expenditure was E. 7,500 में से उसने E रुपीस खर्च किया। Yes. अगर E रुपीस खर्च किया और उस दिन वही D एक्सचेंज रेट था जो हमने यहाँ पे लगाया, सो दिस इज सो मेनी डॉलर्स उसने स्पेंड किया, इनटू 4% का चार्ज, ट्रेवलर्स क्रेडिट कार्ड इतना हुआ। नाउ दे आर सेइंग ये उस दिन ऐसा होना चाहिए कि ट्रेवलर्स क्रेडिट कार्ड महंगा हो और पीसीसी सस्ता हो। पीसीसी में कितना भी खर्च करो ये खर्चा आएगा, 7,500 डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट, कितने डॉलर उसको देने हैं। यहाँ पे अगर उसने ई रुपीस खर्च किया, ई हैज टू बी ऑफ कोर्स लेस देन 7,500 और इक्वल टू डिवाइडेड बाय द एक्सचेंज रेट, सो मेनी डॉलर्स एंड देन द चार्ज। तो कितना खर्चा करना चाहिए? ई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7,500 डिवाइडेड बाय डी इंटू डी डिवाइडेड बाय 1.04, सो डी से डी कैंसल, ई शुड बी ग्रेटर देन 7,500 डिवाइडेड बाय 1.04। बताओ ई का वैल्यू क्या आ रहा है? 7212. 7 नहीं एग्जैक्ट नहीं, मुझे डेसिमल्स में चाहिए। 7211.538. Now the money that she is spending on the PCC card should be greater than 7211.538 and question says to the nearest whole number, so nearest whole number will be 7212, क्योंकि 7211 लिया तो ये महंगा हो जाएगा। 7212 अगर उसने खर्च कर दिया इस प्रीपेड क्रेडिट कार्ड में से और बाकी का पैसा वेस्ट भी हो गया तो भी प्रीपेड क्रेडिट कार्ड सस्ता पड़ेगा देन ट्रैवलर्स क्रेडिट कार्ड। बोलो समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. So this is an inequality का question that came on SAT paper. Yes. Garv Kumar, what's time by your watch? Sir, 8:33. So we have 1 or 2 more minutes to go. So this is the last problem for the day, guys. Challenge problem, yellow problem. Send me your answers privately in the chat box.
a total of at least okay, Veronica, let's see. Okay, good. Let's see. So his speed for jogging and speed for ठीक है अभी देखते हैं अब I started discussion. So speed for jogging is given and speed for biking is given. His goal is to jog and ride for a total of at least 9 miles. That means he can go higher. But he should not do it for more than 1 hour. He should not do jogging plus biking for more than 1 hour. तो दो constraint हैं. Distance minimum 9 miles होना चाहिए. Time maximum 1 hour होना चाहिए. If John jogs J miles and rides his bike B miles, which are the following? तो सबसे पहले तो मुझे ये पता चल गया कि J plus B, this should be greater than or equal to 9. है कि नहीं? क्योंकि इतना डिस्टेंस तो उसको करना ही करना है. तो let's see which options. A and D. A possible है and D possible है. ये दोनों ऑप्शन मेक नो सेंस, इनको हटा दो. बोलो गर्व. Yes. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. When I know कि उन्होंने टाइम की बात की है, तो guys time is, if you remember that formula which says speed is equal to distance upon time. So can I say time is equal to distance upon speed? Yes. तो डिस्टेंस, मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है, मुझे ये निकालना है. तो मुझे डिस्टेंस कवर करना है जॉगिंग करते हुए J with a speed of 6 miles per hour. तो इतना टाइम लगेगा जॉगिंग में. प्लस बाइकिंग में मुझे B miles कवर करना है डिस्टेंस with a speed of 12 miles per hour. Yes. ये दोनों टाइम आ गया, मगर ये दोनों टाइम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. They have to be less than 1. Rather not no more than 1 hour. है ना? तो ये 1 से छोटा होना चाहिए, which is option A. बोलो गर्व. Yes, sir. तो आपने मुझे B भेजा था, समझ में आ गया? I mistakenly took the wrong side. Yes. वेरोनिका, आपको समझ में आ गया? Yes, sir. So 6J क्यों नहीं कौन होगा? सा? 6J क्यों Option नहीं? D. अच्छा, अभी देखते हैं. बताओ 6 का यूनिट बताओ मुझे. What is 6? The speed. The speed. So this is speed. है ना? मैं 6 को स्पीड लिखता हूँ. स्पीड है माइल्स पर आवर. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. What is J? J क्या है? J का The यूनिट क्या है? distance he jogs. तो डिस्टेंस है, मतलब माइल्स है. तो 6 इंटू J का यूनिट क्या हो जाएगा? माइल्स स्क्वायर पर आवर. Yes, sir. टाइम का यूनिट क्या होना चाहिए? सिर्फ आवर होना चाहिए. R. Yeah. फिर ये कैसे होगा? क्योंकि मैंने अभी बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हमको डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है. तो डिस्टेंस है J और स्पीड है 6 माइल्स पर आवर. तो 6 J अपॉन 6 होगा. Okay, sir. गर्व. Yes. So that's all from my side today. I think we are done. आज का हम यहीं खत्म करेंगे. नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, आपका जो भी होगा इस सेशन 5 नेक्स्ट थर्सडे, ये सैटरडे को इंग्लिश की क्लास. Yes. ओके. Okay. Sir. हाँ, वेरोनिका. So I just checked on UT's YouTube channel the earlier videos of the